हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पीआईबी और नैनो मैगजीन का देखेंगे जितना भी आर्टिकल्स है। ठीक है, तो आज 15 मतलब कि जुलाई 2021 को यूथ स्किल डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम रहता है कि रीइमेजिन द यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट न्यूज़ में आ जाता है। शॉर्ट न्यूज़ पहला जो न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च क्या क्या निपुण भारत लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, फिर जिसके कारण कि सो दैट द एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर लर्निंग competitions in reading, writing and numeracy at the end of the grade 3 by 2026-2027। ठीक है, ग्रेड 3। ठीक है, तो five tier implications mechanisms will be set up national, state, district block school levels in all the states and union territories under the aegis of the centrally sponsored and समग्र शिक्षा। ये है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि एजुकेशन आता है तुम्हारा 4th नंबर पर। पहला नंबर पर पॉवर्टी आता है, नो पॉवर्टी। फिर जीरो हंगर आता है, फिर गुड हेल्थ आ जाता है। तो जीरो हंगर होगा तो गुड हेल्थ होगा, गुड हेल्थ होगा तो पढ़ाई अच्छा होगा, क्वालिटी एजुकेशन। फिर जेंडर इक्वालिटी से, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस, एफोर्डेबल्स एंड क्लीन एनर्जी 7th में आ जाता है। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 8 घंटा हम तो काम करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल्स कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस, क्लाइमेट एक्शन आ जाता है। लाइफ बिलो अर्थ वाटर आ जाता है। लाइफ ऑन लैंड आ जाता है। ठीक है, 14-15 हो गया। फिर उसके बाद पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आ जाता है 16। फिर उसके बाद 7th होता है पार्टनरशिप फॉर द गोल। फिर नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज है अबाउट द एटलीस्ट 30 पीपल्स वर किल्ड in separate incidents of lightning in the various part of the country. As a whole, India sees 200 to 2000 to 2500 lightning death every year on average. Lightning is the biggest contributor of accidents of the death due to the natural causes. Lightning rarely hits people directly, but such strikes is almost always fatal. People are most commonly struck by what is called ground currents. The the electrical energies after hitting the large objects on the earth spread laterally on the ground and some distance. The people in the area receive electrical shocks. Just one group scientists of India Institution of Topological Management in Pune work full times on the thunder and lightning. ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टोपोलॉजिकल मैनेजमेंट इन पुणे में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज अबाउट द कल्चर मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी सेड national archives records related to the freedom fighter would be designated within a year, part of the commemoration of 75th year of independence next years. The national chiefs of the India जो कि अटैच ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर established in 1891 at Kolkata as imperial record departments followed the transfer of capital and capital from the Kolkata to Delhi in 1911. The present buildings of the National Achievements Archives of India was constituted in 1926 in Delhi. There are over 50 lakhs files documents presently in the holdings in the National Archives of India. The next short news about the
list of the Union Cabinet Minister issued by the BJP has triggered debate in political circles in the Tamil Nadu as well as social media by referring the Kongu Nadu, the informal name for the region of the western part of the state. Kongu Nadu, ठीक है. Kongu Nadu, neither a place with a pin code nor a name given formally to any regions. Commonly used name part of the western Tamil Nadu. The Tamil Nadu literatures it which refers to as one of the 5 regions of the ancient Tamil Nadu. ठीक है. There are a mention of Kongu Nadu in Sangam literatures as a separate territories. The name given Kongu Vela Gondar, ठीक है. An OBC community which are significant presence in this district. ठीक है. फिर उसके बाद बोल रहा है कि next article short news is about the United States of America has added Pakistan and 14 other countries to the children soldier recruited list published under the annual trafficking and persons reports. ठीक है. The requirement of the use of the children below the age of 15 as a soldier is prohibited by both the United Nations Convention of Right of the Children and additional protocols of the Geneva Convention. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि चाइल्ड सोल्जर रिक्वायरमेंट जो कि रिक्वायर्ड द स्टेट पार्टीज टू टेक all feasible measures to ensure the child under the 18 is not engaged in direct hostilities. It further prohibits the state parties from recruiting children under the 15 into the armed force. For next short news about the about after and late October 2018 India-Italy summits in New Delhi. The bilateral relations as are on the upswings. The latest visit of the Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to Matera in Italy to attend some meetings of a Foreign and Development Ministry of G20 groups has further raised the banners of bilateral relations. Italy has the 8th largest economies in the world. Italy is also a member of 27 national European unions and influence G20 and the powerful G7 beside NATO. Italy is chosen India among the 5 priority countries for the strengthening all-round relations. अब इटली है. इटली के तरफ कौन कौन सा सही होता है तो एड्रियाटिक सी इधर होता है, फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी नीचे होता है और टेरियन सी तुम्हारा वेस्ट साइड में होता है. ठीक है. और सार्डिनिया जो आइलैंड है वो इटली का है, सिसली सार्डिनियन. ठीक है. सिसली और सार्डिनियन आइलैंड है जो कि इटली का ही है. फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में आ जाता है तुम्हारा कि इंडिया एंड नेपाल हैज़ साइंड अ लेटर्स ऑफ एक्सचेंज टू द इंडिया नेपाल रेलवे सर्विस एग्रीमेंट्स 2004 allows all authorized cargo trains operation to utilize the Indian railway networks to carry Nepalese containers and other freights. India includes public and private container trains operation. क्या बोल रहा है कि रेल सर्विस एग्रीमेंट्स 2004 बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट एंड इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू एंड फ्रॉम बिरगुंज जो कि नेपाल बाय रक्सौल इंडिया. बिरगुंज जो कि नेपाल में है, रक्सौल जो कि बिहार में है इंडिया में. ठीक है. उसके थ्रू फ्रीजित कॉरिडोर पास करना है. ठीक है. नेपाल प्रपोज रेलवे नेटवर्क, ये प्रपोज नेटवर्क है. ठीक है. नेपाल का
बेनिफिट ऑफ द लेटेस्ट एग्रीमेंट से क्या बेनिफिट होगा? तो अलाउ द मार्केट forces to operate, so allows the market forces such as consumers and buyers to come up in the rail freight segments of the Nepal's reduce transportation costs, enhance regional connectivity, and they can be amendments of the railway service agreements through a letter of exchange on the three occasions. Amendment was in 2004. फिर उसके बाद letter of exchange was signed in 2018. Letter of exchange is signed in 2016 and enabling the rail transit traffic to from Visakhapatnam port in addition of existing provision of rail transport through Kolkata Haldia ports. फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ relocated the Department of Public Enterprise to the Finance Ministry from the Ministry of Heavy Industries. ठीक है, the Finance Ministry will now have the 6 departments, while Department of Public Enterprise parents Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise will now be called as a Ministry of Heavy Industries. ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आ गया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज जो था वो बस अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज कहलाएगा. ठीक है, ठीक है. It is a nodal department of central public sector enterprise, collects the and maintains the information in the forms of the public enterprise service. ठीक है, service areas in the respect to the CPSE. ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस आता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आता है. ठीक है, इट ले डाउन द पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन द परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट्स एंड इवेल्युएशंस, autonomy and financial delegations, personal management and CPSE help in efficient monitoring of the capital expenditure, assets monetizations and financial health of CPSE. Major function क्या है कि coordinates of matters of general policies affecting all the public sectors enterprise, rendering advice relating to the revivals, counselings, trainings and rehabilitations of employees in CPSE under the voluntary retirement schemes. Categories of CPSE include the conforming Ratna's status among others. The next article about the hydel power projects, so aim to accelerate the tensions of the policies facing the deploys of the various hydel project in the bordering area of Andhra Pradesh and Telangana. So Telangana and Andhra has a stretch of Krishna and Godavari. Both states has proposed several new projects without getting clearance from the river boards, the Central Water Commissions and Apex councils as a mandatory for the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. ठीक है, तो आर्टिकल 262 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स द adjudications of interstate water dispute. The Parliament has enacted the two laws, River Board Act 1956 and Interstate Water Dispute 1956. River Board Act जो कि provides the establishment of river boards by the central government for the
regulations and the developments of the interstates, river and river valleys. Interstates वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो कि एम्पावर करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एंड एडॉक ट्रिब्यूनल्स फ्रॉम द adjudications of disputes between the two or more states in relation to the waters and its interstate rivers and river valleys. इकोनॉमिक क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स 2020 जो कि रिजर्व बैंक्स ऑफ द इंडिया के द्वारा ये मतलब कि पब्लिश किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020 जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा ये क्या जाता है, पब्लिश किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स जो कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ 23rd इशूज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स जो कि पब्लिश्ड बाइनली मतलब कि बाई एनुअली, ठीक है, पब्लिश मतलब कि 2 साल में एक बार। reflect the collective assessments of the sub committees of financial stability and development councils on risks of a financial stability, resilience of a financial systems, also discussing issues related to the development and regulations of the financial sector's impact of COVID-19 second waves on the balance sheets of the Indian banks. Sustained policy supports gathering momentums of vaccinations are naturalizing and uneven global recoveries. Gross non-performing assets ratios of Indian scheduled commercial banks may climbs by the end of the 2021-2022 to as much of 11.2% from 7.48% in March 2021, while bank exposed to better rates large borrowings are declining. ठीक है, they are incipient प्रारंभिक signs of stress in the micro scale medium enterprise and related segments. Demands of the consumer credit across the banks and non-banking financial companies has decreased. With some deteriorations in the risk profits and retail borrowing become evident. ठीक है, अब इस एक क्यूज देख लेते हैं कि एक क्यूज देख लेते हैं, ठीक है। एक क्यूज देख लेते हैं कि यूथ स्किल डेज जो कि 15 जुलाई 2021 का तो थीम क्या है, तो स्किल बिफोर द पैंडेमिक ऐसा कुछ थीम था, ठीक है। सेपरेट इंसिडेंट्स ऑफ लाइटनिंग से इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री सीज लाइटनिंग डेथ्स, मतलब कि लाइटनिंग डेथ्स तो बहुत 2000 से लेकर 2500 तक डेथ हो जाता है, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ साइंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट जो कि पुणे में है, ठीक है, वर्क फुली टाइम टू थंडर एंड लाइटनिंग के लिए वर्क करता है, ठीक है। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया अटैच ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, जाहिर बात है आर्काइव है तो कल्चर का होगा। फिर डैश हैज़ एडेड पाकिस्तान एंड 14 अदर कंट्री इन द चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर्स लिस्ट पब्लिश अंडर द ट्रैफिकिंग एंड पर्सनस रिपोर्ट्स, यूएस ऐड किया है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च नेशनल इनिशिएटिव फॉर डैश निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ निपुण भारत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स, द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो ये आर्टिकल्स कौन सा नंबर बोलता है? 26, 27। शायद 25 या 26 बोलता है ऐसे। ठीक है। इंडिया एंड राइट ऑफ एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 21A बोलता है। ठीक है। राइट ऑफ एजुकेशन जो कि फंडामेंटल राइट्स है, ये 21A बोलता है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया एंड डैश हैज साइंड अ लेटर ऑफ एक्सचेंज टू द इंडिया नेपाल रेलवे सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, नेपाल के द्वारा किया गया। रिसेंटली द गवर्नमेंट रीअलोकेटेड द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज टू द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक इंटरप्राइज लेके उसमें फाइनेंस में डाल दिया। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एजुकेशंस ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 262 ऐसा करता है। 261 ट्रिब्यूनल, ये इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। The DAS released the 23rd issues of financial stability reports. Issues the 23rd financial stability reports कौन इशू करता है? तो इशू करता है तुम्हारा क्या नाम है, RBI। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर। तो यूथ स्किल डे 15 जुलाई 2021 का थीम क्या है कि रीइमेजिनिंग द यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, 2000 से 2500 सब लोग मर जाता है लाइटनिंग से। ठीक है, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट जो कि पुणे में है। ठीक है, जो कि थंडर लाइटनिंग को भी देखता है। फिर नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला है कि पाकिस्तान को डाला है कि जो कि 14 अदर कंट्रीज जो कि चाइल्ड सोल्जर बनाता है। ठीक है, ट्रैफिकिंग एंड पर्सनल रिपोर्ट में ये शो किया गया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि नेशनल इनिशिएटिव्स ऑफ प्रोफेंसीज एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिक्स जो कि निपुण भारत स्टार्ट किया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशंसी और रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिक्स। फिर राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। राइट्स ऑफ एजुकेशन 21A में दिया हुआ है। नेपाल के साथ ये एग्रीमेंट, लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ है। ठीक है, टू इंडियन नेपाल रेलवे सर्विस एग्रीमेंट्स 2004। Recently, government reallocated the Department of Public Enterprise to the Financial Ministry from the Ministry of Heavy Industry से ले गया। ठीक है, आर्टिकल 262 बोलता है कंस्टिट्यूट प्रोवाइड द एजुडिकेशंस ऑफ द इंटरस्टेट्स वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंडिया के लिए पब्लिश करता है। अभी रिसेंटली 23rd पब्लिश किया है। ठीक है, अब प्रीवियस डेज का तुम्हारा क्यूज देख लेते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डैश टू एनलिस्ट NGO दैट कुड प्रोवाइड काउंसलिंग मॉनिटरी सपोर्ट्स लीगल असिस्टेंस ETC टू द LGBT कमिटी। फिर सेकंड बोल रहा है कि Arun Jaitley was awarded Padma Vibhushan posthumously in 2020 in the field of dash under the ministers Dr. Jitendra Singh asked the authorities to expedite the work on the
complex coming up in this border area of Heranagar, Jammu. फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट कि द डैश CSS of the life-saving device that help in the safe injections of a fighter aircraft pilots in the time of distress. फिर फिफ्थ बोल रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जापानीज जेन गार्डन्स, ठीक है, जो कि कैजिन एकेडमिक्स इन डैश. फिर बोल रहा है डैश इन जापान इज अ मेडिएशन डैश टू चेंज द बेटर और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स. फिर बोल रहा है STG डैश रिलीज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ऑफ द नॉन to for-profit hospital models in the countries. STG dash called for affordable, reliable, sustainable energy for all by 2030. ये 7 है STG 7. फिर नेट्रिप जो कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डैश क्या है. फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज इनॉग्रेटेड द नेट ट्रैक्स द हाई स्पीड ट्रैक्स इन द डैश. अब इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है. तो मध्य प्रदेश या मद्रास हाई कोर्ट directed the Ministry of Social Justice to enlist the NGO that could provide the counseling, monitoring, supports and legal assistance to the LGBT committee. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को बोला, ठीक है, LGBT कम्युनिटी को लिस्ट आउट करने का. Arun Jaitley was awarded the Padma Bhushan posthumously by 2020 in the field of public affairs के फील्ड में. फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह asked the authority to expedite the work of on Arun Jaitley complex coming up in the border area of हिरानगर जम्मू में. फिर उसके बाद कैनोपी सेवरेंस सिस्टम SEVERANCE system SEVERANC severance system is a life-saving device that help in safe injections of fighter aircraft pilots in the time of distress. India Prime Minister virtually inaugurated the Japanese Zen Gardens, जो कि कैजेन्स एकेडमिक्स इन द अहमदाबाद गुजरात में. फिर जेन इज़ अ जेन इन द जापान इज़ अ मेडिएशन से कैजेन टू चेंज द फ्रॉम बेटर और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स. फिर नीति आयोग रिलीज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ नॉन for-profit hospital model in the country, not for-profit hospital model of the countries. नीति आयोग. SDG 7 जो कि कॉल करता है अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030. फिर उसके बाद नथ्रिप जो कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है. The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise inaugurated the high-speed tracks in Pithampur, Indore, Madhya Pradesh. Pithampur, Indore, Madhya Pradesh. ठीक है. Please like, subscribe and share the video. Thank you.